Good morning, student. So see, today I think I am taking the sixth class of the chapter tangents and normal. Okay, I have discussed many things, and already I have started the exercise till question number 15. Most of the sums I have done, and some of the questions only I left it as your homework. Okay, so today almost all the questions, they have the similar pattern. I told you before also that if you want to do the chapter tangents and normal, your concept about the chapter straight line, what you have done in class 11 should be very clear. Okay, I told you also that you try to revise those parts from class 11. Okay, because these things are required here. Okay, only one added conditions are coming, that is the differentiation. Only differentiations you have to done, but the conditions you have to apply from the chapter straight line only. Okay, see here also almost same thing is coming. Question number 16. What is the question? Show that the tangents to the curve. Two curves, one curve is given, y equal to 7x cube plus 11 at the points x equal to 2 and x equal to minus 2 are equal. So see, I told you that whenever we are drawing the curve from here, we are just drawing an arbitrary curve because we do not know the curve, because there are various types of curves. So it is not possible that you will remember all the curves whatever is given in the question, because the drawing curve is not important here. What is important, that you have to do the sums, that is very important. Okay, how to do the sum, that is important. You can draw any curve, but the concept you keep there on the curve. ठीक है, so देखो सपोज मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, कर्व टू है सपोज ये, suppose this is a curve. Okay, I have drawn an arbitrary curve. This is not the actual curve, because there are sometimes the power may be 4, sometimes the power may be 5, sometimes the power may be 7. How many curves you will draw? So just I have drawn an arbitrary curve. Okay, so after that you see what is written here. Show that the tangents to the curve y equal to 7x cube plus 11 at the points x equal to 2, x equal to minus 2 are equal. Okay, so we shall draw tangents to this curve. What we shall do? We shall draw tangents to the curve here. Okay, so suppose this is the coordinate axis. This is the coordinate axis here. Clear? Now we shall take point x equal to 1. So x equal to 1, x equal to 2. Well, this curve is x equal to minus 2, so we have to take. Suppose this part is x equal to minus 2. This part. Okay, this is minus 2. So we shall draw tangents at this point x equal to 2, and we shall draw tangents at the point x equal to minus 2 also. So if we draw tangent here, it will be like this. If we draw tangent at this point, then also it will be like this. Now see, these two tangents are parallel. This line is parallel to this one. So according to the question, we have to show that one only. I am again telling you, this is not the actual curve. Okay, so we shall draw a curve, and on this curve we shall take 2 points. One is x equal to 2 and one is x equal to minus 2, and we will show that the tangents, when it will be drawn at these 2 points, will be equal, will be parallel. Parallel means their gradients are equal. So that means this grid, whenever two lines are parallel, these concepts are coming from the chapter straight line only. And when two lines are parallel, tangents means what? Tangents means it is a line, है कि नहीं? Tangents जो होता है वो क्या होता है? एक लाइन होता है. So लाइन को हम लोग को पैरेलल शो करना है, और लाइन पैरेलल कब होगा? जब उन दोनों का ग्रेडियंट इक्वल होगा. That means इस लाइन का और इस लाइन का ग्रेडियंट इक्वल होना चाहिए. So in case of calculus, what is the slope or gradient of the tangent? Slope or gradient of the tangent is dy by dx. At this particular point, what is the point here? X equal to 2. What is the slope of the tangent? At this point, dy by dx, x equal to minus 2.
So these two should be equal. This one and this one should be equal. So if we consider this is to be m1, this is to be m2, this m1 should be equal to m2. If we can prove that this m1 and m2 are equal, that means the tangents at the 2 points, that is x equal to 2 and x equal to -2, will be equal. Okay. So let us start the sum. Very simple. You can do it by yourself also, but still I am doing the sum. अभी देखो हम लोग को dy by dx एट द पॉइंट x1 y1 निकालना है एंड x यहाँ पे मैंने बोला था x1 y1 का जाकर क्वेश्चन पे जो दिया रहेगा हम लोग को उसी पॉइंट पे dy by dx निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया x equal to 2, सो इन प्लेस ऑफ x1 y1 वी शैल राइट x equal to 2। तो पहले मैं क्या करता हूँ, गिवन कार्ड से dy by dx निकाल देता हूँ। गिवन कार्ड इज y equal to 7x cube plus 11, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx, मल्टीप्लाई 1, इसको 1 से मार्क कर दो। अगर हम लोग इसको 1 से मार्क करेंगे तो dy by dx क्या होगा, 3 7 21 x square, this is 0, that means we are getting 21 x square only. So this is dy by dx. Now let us consider that m1 be the gradient of the tangent at the point x equal to 2 and m2 be the gradient of the tangent at the point x equal to 2. After that we shall find the value of m1 and m2. So let m1 and m2, let m1 and m2 are the gradient slope is the same thing, slope of tangent to equation 1 at x equal to 2 and x equal to -2 respectively. So let us find the value of m1 and m2 now. We shall find the value of m1 and we shall find the value of m2 and we shall show that this m1 and m2 are equal. Okay, so what is the value of m1? So m1 equal to dy by dx at the point x equal to 2. So यहाँ पे x जो है इस x का जगह में 2 बैठा हो, x का जगह में 2 बैठने से क्या होगा, 21 into 2 square. So this is 4 into 21 is 84. So you have got m1 equal to 84. Similarly find the value of m2, dy by dx at the point x equal to -2, ठीक है। So dy by dx at the point x equal to -2 होने से क्या होगा, यहाँ पे 21 - 2 whole square. So this is 4 into 21 is 84. So you have got m1 and m2 are equal. Since m1 and m2 are equal, so the slope of the tangents at the point x1 x equal to 2 and x equal to -2 are equal. So m1 equal to m2. So slope of tangents at x equal to 2 and x equal to -2 are equal. So the solution is completed. Clear? So this is a very simple sum.
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व at curve y to the x cube at which the slope is equal to y coordinate of the point. Find question number 17. Okay, what is question number 17? Find the points on the curve y to the x cube at which the slope is equal to y coordinate of the point. So this is the question. What is the question here? Find the point on the curve. One curve is given. Okay, y into x cube at which the slope is equal to y coordinate of the point. I told you that in the chapter tangents and normal, in most of the cases we have to find the points. Sometimes points you are not told to find the points, but still you have to find out the points. Okay, depending upon the curve. Because sometimes you may be asked, find the equation of the tangent, find the equation of the normal, like that questions may come. Okay, अभी देखो, find the points on the curve y to the x cube at which the tangent is equal to y coordinate of the point. First take understand. Suppose ये है, suppose ये कर्व है, हम लोग को इस कर्व का ऊपर, ये जो कर्व है, इस कर्व का ऊपर एक पॉइंट निकालना है, ठीक है? Find the points on the curve y to the x cube at which the slope is equal to, सपोज हम लोग इस पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक ये पॉइंट को हम लोग को निकालना है x1 y1, लेकिन ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कैसे निकालना है? स्लोप इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सो ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट का जो स्लोप निकलेगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट? इस टेंजेंट का dy by dx इज द पॉइंट x1 y1, ठीक है? इस पॉइंट पे जो स्लोप निकलेगा वो स्लोप क्या होगा? इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये क्वेश्चन में दे दिया। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यही क्वेश्चन पे दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड इट, दैट मींस अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 y1 बाय अप्लाइंग दिस कंडीशंस, ठीक है? और पहले भी मैंने बोला था कि अगर टेंजेंट एंड नॉर्मल पे हम लोगों को अगर पॉइंट निकालना है, दैट मीन्स इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 y1, पहले हम लोगों को x1 और y1 जो पॉइंट है उसको कंसीडर करना पड़ता है। अगर हम लोग उस पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे तब हम लोगों को दो इक्वेशन क्रिएट करना पड़ता है। तो दो इक्वेशन कैसे बनेगा? एक इक्वेशन तो ऑटोमेटिकली जो गिवन कर्व है वहाँ से बन जाएगा, और दूसरा इक्वेशन बनेगा जो कंडीशन है उस कंडीशन से। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने से x1 और y1 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है? सो गिवन कर्व इज, गिवन कर्व इज क्या होगा? y इक्वल टू x क्यूब, दिस इज द गिवन कर्व, ठीक है? मार्क इट बाय 1। फिर पॉइंट को कंसीडर करना है, लेट p x1 y1 be the required let p x1 y1 be the required point
हम लोग का भी x1 y1 कैलकुलेट करना है। सो क्योंकि px1 y1 इज अ पॉइंट ऑन द कर्व, सो y कोऑर्डिनेट कैन बी रिप्लेस्ड बाय y1 एंड x कोऑर्डिनेट कैन बी रिप्लेस्ड बाय x1 मल्टीप्लाई टू। सो एक इक्वेशन हम लोग को इमीडिएट मिल जाएगा, है कि नहीं। पहले भी मैंने बोला था कि कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए जो दो इक्वेशन हम लोग को बनाना पड़ता है, वो दो इक्वेशन से एक इक्वेशन ऑटोमेटिक जो गिवन कार्य है वहाँ से बन जाता है। दूसरा जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगा, वो कंडीशन अप्लाई करके बनेगा। सो अभी डिफरेंशिएट कर दो 1, डिफरेंशिएटिंग 1 dy बाई dx, dy बाई dx क्या होगा 3x स्क्वायर। सो dy बाई dx का पॉइंट x1 y1 क्या होगा, so dy by dx at the point x1 y1, what will be this one, this is equal to 3 x1 square, clear। so dy by dx at the point x1 what we have got, that is equal to 3 x1 square। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, एंड dy by dx at the point x1 y1 is what, it is the slope of the tangent, है कि नहीं। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और क्वेश्चन पे क्या दिया है, ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ये इक्वल टू y कोऑर्डिनेट है। इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने y कोऑर्डिनेट को क्या लिया है, y1 लिया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x1 स्क्वायर इक्वल टू y1, बिकॉज दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन टू बी y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या है y1, so they are equal। so we have got another equation, so multiply how much 3। so now we shall solve 2 and 3 and we shall calculate the value of x1 and y1। so very simple। so इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने से क्या होगा, so 2 implies y1 का जगह में क्या पुट कर दोगे 3x1 स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज x1 क्यूब, दिस इज बाय 3। जस्ट यहाँ पे मैंने y1 का जगह में क्या पुट कर दिया, y1 का जो वैल्यू है 3x1 स्क्वायर उसको पुट कर दिया। सो दिस इज x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। टेक x1 कॉमन, क्या होगा x1 स्क्वायर माइनस 3 equal to 0। तो यहाँ से x1 स्क्वायर कॉमन जाता है, x1 स्क्वायर, तो यहाँ पे x1 माइनस 0, x1 स्क्वायर इज कॉमन। सो this implies x1 square equal to 0, x1 minus 3 is also 0। so what is the value of x1, 0, and what is the value of x1, 3। so when x1 is 0, what is the value of y1, y1 equal to 3x1 square, यहाँ पे पुट कर दो। so when x1 equal to 0, y1 is also 0। when x1 equal to 3, when x1 equal to 3, what is the value of y1, y1 equal to, यहाँ पे 3 पुट करने से 9 27। so one point is 0, 0 and the other point is 3, 27। so the required points are So the required points are required points are one is 0, 0 and other is
3,27. So these are the required points. Clear? So these two questions, actually every day I am solving only two questions, because if the video is very long, you will be also feeling bored to watch the video and practice the sums again, because it takes times to watch the video, to write down the solutions, to do the homework. That's why I am doing only two sums every day. Okay, I am not giving you the burden, but you should be very regular. You try to watch all the videos, all the sums, you try to practice all the sums, whatever I am doing here. After that, you try to solve the questions from the NCERT book. Okay, thank you.